FIR should be registered against podcaster Ranveer Allahabadia. Sir, how do you see this case and what is your comment on this? Well, the matter is currently sub judice before the Supreme Court, so we will not comment on the merits of the case. But practically speaking, this particular matter raises a fundamental issue as to what is obscenity, how much content on the social media or on electronic platforms can be considered as obscene, and what's going to be the responsibility of the people who are publishing or transmitting such content. Now, as for that, the law is very clear. We have Section 67 of the Information Technology Act 2000, which deals with the offense of obscenity in the electronic ecosystem. Look, it's important to note that while we talk about obscenity in a layman's language, Section 67 does not use the word obscene. Instead, it talks about three fundamental things. Somebody must either publish or cause to be published or transmit or cause to be transmitted electronic information that is lascivious or which appeals to the prurient interests, or the effect of which is to tend to deprave and corrupt the minds of those who, having regard to the relevant circumstances, are likely to see, read, or hear the same. So the thumb rule is, the law has still not given us a definition of what's obscenity, because each case will have its own facts to determine what is obscenity. But the fundamental rule of Hicklin test of the 1830s, which was adopted by the Privy Council, has been adopted first in the Indian Penal Code and then has been now adopted under the IT Act, which is what's going to be the effect of this kind of information on the minds of people who are likely to see, read, or hear the same. Now, clearly, when you're going to talk of parental sex to children and their reactions to the same, it's a very, very touchy subject. It's obviously going to come within the ambit of Section 67 of the IT Act. Now, in certain cases, it can even be argued that this is actually content which is having explicit sexual kind of a content. And that being so, even Section 67A of the IT Act could be attracted. So while the matter is sub judice, the important thing is the Supreme Court has once again reiterated that you may be popular, you may be the most, shall I say, the relevant person in media today, but that does not give you a license to speak about something, to publish content which goes against the sensibilities of the community and society. And that being so, while interim relief has been granted, the fact is the law will take its own course. The matter has to be appropriately investigated. But yes, no further FIRs as per Supreme Court order. And so long as there's going to be cooperation by the concerned petitioner with the law enforcement agencies, the law will take its own normal course. So there's been a protection that's been given to the petitioner in this case. But this is only interim. Rest everything will depend upon what kind of relevant electronic evidence is going to be collected by the police in this kind of a matter, and how it will be produced and proved in a court of law as per the requirements of the Bharatiya Saksh Adhiniyam 2023. So it's a very interesting case. Well, traditionally I've seen in the last almost 25 years, while the IT Act has been enforced, there's a distinct hesitancy of the police to register cases under Section 67 of the IT Act. This is so because it's a bailable offence, punishable only with 3 years imprisonment, 5 lakh rupees fine. So the police also does not tend to give much focus on this. But because in this kind of a matter, there was so much of reactions of the people to the content which was generated. That's the reason the police has registered these cases. We also as a nation have not been very successful in getting convictions in cases of obscenity in the electronic ecosystem. India's conviction rate is less than 1%. So it will be interesting to see how this matter proceeds and what kind of twists and turns this matter is likely to go in courts of law. Also, Supreme Court asked the center if it is want to do something about the obscene content on YouTube. We would like to do something. If the government is willing to do something, we are happy. Otherwise, we are not going to leave the Wacom and therein area the way it is being misused by so-called YouTube channel and YouTubers, sir. So how do you see? Well, clearly this particular issue is telling us that the political will is missing. There's so much of obscenity content that's available on reels and social media that people are beginning to make lose a distinction between what's decent versus what's not decent. You can't really say that our communal standards or community standards have eroded
and that's the reason why that gives you a license to publish content which is obscene. But having said that, the onus will still lie on the government as to how strongly can it come in, number one, enforce existing provisions of law, being Section 67 of the IT Act. Number two, overcome the hesitancy of the police to register cases for obscenity under Section 67 of IT Act. And number three, a bigger thing, we must focus the liability of the service provider. Ultimately, all this content on social media is being made available on certain platforms. The platform owners cannot say, I will close my eyes and I cannot be held responsible. The very fact that the platform owner is providing the platform, it's his duty under the IT Rules 2021, specifically Rule 3, to make sure that its users do not use the platform for publishing content which is pornographic. And because most of the platform owners are not really fulfilling their mandatory duties, these kind of cases are beginning to come up. So if there's going to be political will, and in case if you're going to take a strong action against intermediaries for their failure to remove obscene content, that can also give a long kind of a message to the community at large. And ultimately, it's all about sensitizing people. There's no point in playing with fire when you know that the law publishes, makes the publication or transmission of obscene content as an offense. But if there's not going to be effective enforcement, then the law will only be a paper tiger and people will continue to keep on flouting it. इस मामले ने बहुत सारे मुद्दों को आज सेंटर स्टेज में ला खड़ा कर दिया है। पहली महत्वपूर्ण बात, क्या आपको लाइसेंस है कि आप अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन या प्रसारण कर पाए? नंबर दो, अगर आप लोकप्रिय भी हैं तो क्या आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ऑब्सीन कंटेंट को पब्लिश करना, ट्रांसमिट करना आता है? और तीसरी बात कि क्या सरकार की कुछ जिम्मेवारी है? और चौथी महत्वपूर्ण बात कि क्या सर्विस प्रोवाइडर्स का भी कोई दायित्व है इस दिशा में? तो पहला मुद्दा का तो बहुत स्पष्ट सा जवाब धारा 67 भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून कहता है कि कानून ऑब्सेनिटी वर्ड डिफाइन नहीं करता। कानून कहता है कि अगर आप कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक जानकारी का प्रकाशन करेंगे, प्रसारण करेंगे या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करेंगे जो अश्लील है या जिसको देखने के बाद लोगों के मस्तिष्क पर एक नकारात्मक प्रभाव पहुंचेगा, तब आप एक दंडनीय अपराध कमिट करेंगे। सेक्शन 67 आईटी एक्ट में 3 साल की सजा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। हाँ, बहुत सीरियस ऑफेंस नहीं है, बेलेबल ऑफेंस है। आपको हक के तौर पर, अधिकार के तौर पर आपको बेल मिलती है। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्या मेरी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या वो शामिल है कि मैं अश्लील कंटेंट को भी प्रकाशित कर सकूं? तो लॉ बहुत क्लियर है कि आपके पास फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो जरूर है, लेकिन इस पर रीजनेबल अंकुश लगाए जा सकते हैं धारा 19(2) भारतीय संविधान के तहत। और वे अंकुश इसलिए लगाए जा सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरालिटी की दिशा में। तो इस संदर्भ में जब हम लोग यहाँ लॉ आया है सेक्शन 67, 67A, 67B आईटी एक्ट, तो ये रीजनेबल अंकुश है। इसलिए आपकी फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में अश्लील कंटेंट की स्पीच शामिल नहीं है। तीसरी बात, सर्विस प्रोवाइडर्स क्या कर रहे हैं? भारत का आईटी रूल 2021 देखें तो रूल 3 कहता है, साहब आप सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, अपने उपभोक्ताओं को बताएंगे कि साहब मेरे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल ना करें अश्लील कंटेंट का प्रकाशन या प्रसारण में, और उसके बाद अगर आप करते हैं तो जिम्मेवारी आपकी होगी और जैसे मुझे पता लगेगा मैं उसको रिमूव करूंगा। आजकल अधिकांश प्लेटफॉर्म्स अश्लील कंटेंट को ना तो मॉनिटर कर रहे हैं, ना उसको रिमूव करने का कोई प्रयास कर रहे हैं। आप ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म में भी शिकायत दाखिल करें तो अक्सर आप पाते हैं कि जो 24 घंटों में उन्होंने काम करना है वो अक्सर अधिकांश सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं किया करते। और चौथी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल अगर ज्यादा सशक्त होगी तो हम वर्तमान कानून को इफेक्टिवली इन्फोर्स करा पाएंगे। दूसरी बात, एक्शन ले पाएंगे सर्विस प्रोवाइडर्स के विरुद्ध, क्योंकि एक आपने एक्शन ले लिया सर्विस प्रोवाइडर के विरुद्ध तो एक ब्रॉडर मैसेज इकोसिस्टम में चला जाएगा कि साहब ऐसा है, अगर मैं अश्लील कंटेंट को प्रकाशित या प्रसारित करूंगा तो मैं आग के साथ खेलूंगा, और अगर मैं आग के साथ खेलूंगा तो जिम्मेवारी भी मेरी स्वयं होगी। अंततः मुझे लगता है जो उपभोक्ता हैं उनमें ज्यादा जागरूकता फैलानी होगी। कहा जाता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इन द आइज ऑफ लॉ। तो इसलिए आप कानून से अनभिज्ञ हैं, उसका कानून से कोई ताल्लुक नहीं है। जितनी जल्दी आप कानून के जो प्रावधान है उनके के बारे में जानकारी आपको मिले, जागरूक हो, अच्छा है,
कोशिश करें इस तरह के कंटेंट को सोशल मीडिया पर, रील्स पर प्रसारित ना करें, वरना शिकायत होगी, आपके खिलाफ मुकदमे होंगे और ये मुकदमे कई साल चले जाएंगे। तो कोशिश करें कि अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका एक सदुपयोग करें और उसको कंस्ट्रक्टिव दिशा में लेके चलें, ताकि हम कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को भी अपहोल्ड कर सकें। केंद्र सरकार से भी सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने, उनका कैसे आप इसमें रोल देखते हैं सरकार? देखिए, मुझे लगता है केंद्र सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। पहला तो यह है कि पॉलिटिकल विल होनी जरूरी है केंद्र सरकार की इस दिशा में। अब अधिकांश केसेस में हम पाते हैं कि अश्लील कंटेंट के बहुत सारे केसेस आते हैं, लेकिन या तो पुलिस दर्ज नहीं करती, दर्ज करती है तो उन्हें कन्विक्शंस नहीं मिल पाते। हम लोगों का साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो अश्लील कंटेंट में लेस देन 1% है। तो इस संदर्भ में सरकार का दायित्व बनता है कि एक, कानून का संशोधन करे, ऑब्सेनिटी को एक नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाए ताकि एटलीस्ट एक ब्रॉडर मैसेज ला पाए। दूसरी बात, सरकार अगर कड़े कदम सेक्शन 79 और सेक्शन 85 भारत के आईटी एक्ट के तहत सर्विस प्रोवाइडर्स के विरुद्ध करेंगे तो भी एक सैल्यूटरी मैसेज जाएगा। और अल्टीमेटली ज्यादा कैपेसिटी बिल्ड करें, लोगों में ज्यादा जागरूकता फैलाएं कि साहब ये आग का गोला है, आग का दरिया है, इसमें अगर आप कूद गए तो नुकसान आपको होने वाला है। तो कोशिश करें कि आप कानून के प्रावधानों का पालन करें, उसका उल्लंघन ना करें। अल्टीमेटली सारे लोगों को मिलकर एक समन्वय और सामंजस्य के साथ कॉपरेशन करनी पड़ेगी, योगदान देना पड़ेगा, ताकि हम लोग अपने कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड कर सकें और जो हमारा साइबर इकोसिस्टम है उसको दूषित ना कर पाए ऑब्सेनिटी के साथ, ऑब्सीन इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन के साथ।